हमने हमारा बचपन गुजारा है, ये हमारी सरस्वती भूमि है जहाँ पे हमने अक्षर अभ्यास से लेके 12वीं कक्षा तक till 12th class we have spent our time from 1960 to 1970, and it was my fortune that when I came to inquire for this hall and gave my application, I was stunned when Babu Rao Garu, the correspondent, called me and said, "Meeru ma school alumni na, aithe meeru 26 January function ki ragalutara chief guest ka." That was my cherished moment, and that made me meet Madam Lakshmi, who is the principal, and Harihara Sharma Garu, who is the secretary. Rather, these people have totally changed the environment of the school. The school we remember as student was totally different. And Khande Rao ji, the real spirit behind this school, he made us carry the bricks to construct this hall, and which was in a totally different state than what it is today. Thanks to the new management of the Keshav Memorial Education Society, that whole picture has changed. Part of it probably is also because of our Neil Gokte and the KMIT group which joined. Coming here makes me remember all my childhood which we have spent. In those days we used to get angry with our teachers because they used to be very strict, and as a matter of fact, the only person I could meet after coming here was Narendra ji, our drawing teacher. And if I remember, हमारे क्लास टीचर अगर नरेंद्र जी हैं और स्कूल में पहले आते ही सबको लाइन से बेंच के पास खड़े करना, सबके हाथ टेबल पे रखो, हाथ में उनके छड़ी होती थी, नाखून काटे हुए कि नहीं है, शर्ट के बटन पूरे लगे हुए कि नहीं है, बूट पहने कि नहीं, लेस बांधे कि नहीं, अगर उसमें से कोई भी एक्टिविटी ना होती तो इमीडिएटली बेद के एक मार पड़ जाती थी. There were teachers like Lingamurthy sir, who used to be a terror, we all used to be afraid. But in those days, the memories were different. Today we feel grateful to them because what they did then, though we did not like it at that time, because of that, whatever little culture we are still retaining, the great culture of our country, we are still able to retain because in childhood we were made to do all these things about studies, about general behavior. Anyway, if I start telling all these things, probably it will take long time, but I was telling all this because our school is celebrating its Platinum Jubilee, and this hall was inaugurated by our beloved Prime Minister Narendra Modi last year when the Platinum Jubilee year started. And we luckily got a chance to be part of this because the management thought that all the alumni will come and will celebrate. So this year's version of Chaitra Lahari, I thought I will dedicate to my alma mater, my school, the Keshav Memorial School, which has taught us how to live in this world in a graceful and decent way. Without taking much time, because our today's main program is the musical program, and there again I was lucky that Madam Lakshmi Devi, who is the principal here, she also consented to start the program by giving a Carnatic Sangeet program in the beginning. I am very thankful to her for accepting that. So I will request Harihara Sharma Garu to come onto the stage so that we are going to do Saraswati Vandana and Puja with the Deepa Prajalana. Then I will, our chief guest Lalita Dattare Kurulkar, my younger sister, come one of the doyens of the Hindustani classical vocal Sangeet now, and she was graceful to
be the main person on the first edition when she really enthralled people till 11 o'clock in the night. Then I request Babu Rao Garu, who is the correspondent, and all the people around. Then I'll, Neil Gokte I think has not come. Then I'll call Narendra Rai sir, because he has been like my teacher plus a family member. मतलब वो इतने हमारे घर से इतने घुल मिल गए थे कि हमारे घर के तकरीबन सभी लोगों को वो जानते हैं, क्योंकि बचपन से वो घर में भी मिलते थे. वो हमारे टीचर कम एंड एल्डर, हमारे घर के एल्डर के जैसे ज़्यादा थे. उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि ये दीप प्रज्वलन के बाद में वो हमको, बिकॉज ही इज़ नाउ ए नेशनल लेवल कवि, जो भारत के कई भागों में कवि सम्मेलनों में जाके हैदराबादी दक्खनी पद्धति से कविताएं पढ़ते हैं. तो आज भी वो प्रोग्राम के शुरू उन्हीं से होगा कि वो कवि अपनी कविताएं थोड़ी सुनाएंगे. उसके बाद में हमारे सुरेंद्र भारती जी, चूंकि ये प्रोग्राम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का है, ये मेरा छोटे भाई जैसा, क्योंकि मेरे से 2 साल छोटा था, हमारे केशव मेमोरियल स्कूल में, और तब से ही हैज़ बीन ए चाइल्ड प्रोडिजी. मतलब हम लोग जो कुछ करने की कोशिश करते थे, ये बुलबुल तरंग बजाता था. बाद में हारमोनियम पे जब जैसे आ गए, तो ही इज़ नाउ वन ऑफ द लीडिंग हारमोनियम प्लेयर्स इन द कंट्री. रादर मेनी ऑफ द सीनियर vocal singers of the country, when they come and present in Hyderabad, they love to have him as accompanying on harmonium. In-law to come and recite the Saraswati Vandana, while I request all my guests to light the lamp. Malika. इथे ठीक है. या कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर तंडमंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर तंडमंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती, सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः. Thank you. Now I request my wife Shobha to present a shawl to the chief guest of today, Lalita. Sir. Lalita is like our family member, so I can take the liberty of being very nice to her. We are informal because that is another thing I decided. Each Chaitra Lahari, it's not going to be a formal kind of a function. It's informal, more like a family gathering where we all will be participating in that.
And one more news that I came to know today was my brother Surendra Bharti and his wife Viju are celebrating their marriage anniversary. So I would all request all of you to bless them on their marriage anniversary. So, All to Dr. Harihara Sharma. on 26th January, when Harihara Sharma Garu started addressing the crowd, I was reminded all my teachers, because the way, in a simplified way, he tried to tell all the students present that day what is the importance of 26th January and actually what we are celebrating and what are we expecting from everybody to do on 26th January. And it was such a thrilling experience. I think I will give him a shawl and then he can 2 minutes he can enthrall you in his language. డాక్టర్ మధుసూదన్ జోషి గారు, మా స్కూలు నరేంద్రరాయ్ గారు. మా స్కూల్ అంటే నేను ఈ స్కూల్లో చదవలేదు, కానీ ఈ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ తరఫున ఉన్నాను కాబట్టి అది మా స్కూల్ కింద లెక్క. నేను ఆల్రెడీ ఇప్పటికి 18 సంవత్సరాలు బట్టి, నియర్లీ అబౌట్ 18 years, I have been working as the honorary secretary of the school. నేను ఈ స్కూల్లో వచ్చిన తర్వాతే నరేంద్రరాయ్ గారు రిటైర్ అయ్యారు. ఆయన రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్కి నేను కూడా ఉన్నాను. సో ఈ స్కూల్ అప్పుడు ఈ హాల్ కొంచెం పాతకాలంగా ఉండేది. అయితే ఈ హోటల్ వైస్రాయ్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఈ స్కూల్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి ఆయన్ని కూడా మధుసూదన్ జోషి గారిని పిలిచినట్టు రిపబ్లిక్ డే ఫంక్షన్కి పిలిచి లోపలికి తీసుకొచ్చి ఈ ఆడిటోరియం చూపిస్తే ఏమిటి ఇట్లా ఆడిటోరియం డిలాబిటేటెడ్ కండిషన్లో ఉంది అంటే ఏమి లేదు, మరి ఏం చేయాలంటే దెన్ హి సెడ్ ఐ విల్ డొనేట్ ఫర్ ది ఫాల్ సీలింగ్ ఆఫ్ ది హాల్ అని. మీరు డొనేషన్ చేయొద్దు, యూ డూ ది వర్క్, మాకు డబ్బు వద్దు, పని చేయండి అని చెప్పాము మేము. ఈ ఎంప్లాయిడ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ హీ డిడ్ ఆల్ ది వర్క్. ఫాల్ సీలింగ్ అదంతా అయింది. తర్వాత సౌండ్ ప్రూఫ్ కూడా చేసి పెట్టారు. సో అవర్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ డిడ్ ది ఎంకరేజ్మెంట్, దే ఎన్హాన్స్ ది ప్రెస్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ హాల్. ఇప్పుడు అట్లాగే మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్ డాక్టర్ మధుసూదన్ జోషి బై స్టార్టింగ్ మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్స్ హియర్, ఐ థింక్ దట్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ ఆరా అరౌండ్ దిస్ హాల్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ ఆశీర్వాదం డెఫినెట్గా అది సాధించగలుగుతాము. దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రజెంట్ ఎ షాల్ టు అవర్ నరేంద్ర రాయ్ సార్. అండ్ బాబురావు గారు. కాబట్టి మీరు వైఫ్ని పిలిచి ఇద్దరికి కలిపి సెలవు విజు Harihara Sharma Garu wants that wife also should be along with him when because this is your wedding anniversary. तो इसको लंबा खोलना पड़ेगा मेरे दोनों मिलके पहनाएंगे. शोभा informal only. So pardon us for doing this. Right.
थैंक यू सर। क्या बैठ के आइए साहब। हास्य रस में भी सुनाएंगे साहब। आइए, सब सुनते साहब, आप आपका काव्य सुनने के लिए सब लोग ये लीजिए। वैसे एक कवि सम्मेलन का माहौल तो है नहीं, लेकिन मधु की इच्छा है, इसीलिए आप थोड़ा सा सहन कर लें मुझे। हमारे सेक्रेटरी साहब की भी इच्छा थी कि हास्य होना चाहिए कुछ। मैं कुछ मुक्तकों से अपनी बात आरंभ करता हूँ। चाह अगर मंजिल की हो, हमारे मधुसूदन तुम्हारे लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। चाह अगर मंजिल की हो आराम की मत सोचना, चाह अगर मंजिल की हो आराम की मत सोचना, और काम जो नेकी के हो तो नाम की मत सोचना। काम जो नेकी के हो तो नाम की मत सोचना। सौदेबाजी हर जगह अच्छी नहीं होती नरेन, चीज अगर अच्छी मिले तो दाम की मत सोचना। हर एक हाथ को काम मिले नामुमकिन है, हर एक हाथ को काम मिले नामुमकिन है, हर मेहनत के दाम मिले नामुमकिन है। जो मिल जाए उसमें तृप्त रहो यारो, हर केवट को राम मिले नामुमकिन है, हर केवट को राम मिले नामुमकिन है। उस समय को देखते हुए थोड़ा बारिश अभी गीत न नामवर हीरो है ये, इसमें अदाकारी न देख। नामवर हीरो है ये, इसमें अदाकारी न देख। और आधुनिक है ये कला, इसमें कलाकारी न देख। नामवर हीरो है ये, इसमें अदाकारी न देख। और मॉडर्न है ये कला, इसमें कलाकारी न देख। ढूंढता रह जाएगा कुछ हाथ आएगा नहीं, अरे देश का नेता है ये, इसमें वफादारी न देख। आज़ादी के इतने वर्षों पहले हमारे क्रांतिकारियों ने क्या क्या कल्पना की थी आज़ादी के बाद, और आज इतने वर्षों के बाद क्या मिला। कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूं, फिर हास्य कविता साहब की इच्छा थी। बाग की चाह में हमको जंगल मिला, बाग की चाह में हमको जंगल मिला। अमन की राह में हमको दंगल मिला। ढूंढते रह गए हम तो संसद भवन, राजधानी में बस हमको चंबल मिला। राजधानी में बस हमको चंबल मिला। हमको संसद में सारे मदारी मिले, हमको संसद में सारे मदारी मिले। ऊंचे ऊंचे पदों पर अनाड़ी मिले। हाथ रिश्वत की खातिर पसारे सभी, दाता एक ना मिला सब भिखारी मिले। दाता एक ना मिला सब भिखारी मिले। दखनी भाषा हैदराबाद की जाने अनजाने सभी बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर हर संडे और मंडे रविवार को मिलाप में मेरी कविताएं छपती हैं, 10 साल से छप रही हैं। क्रिकेट का भी बहुत बुखार लोगों पर चल रहा है और आगे भी होने वाला है, तो दखनी भाषा में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं क्या बताऊं जी भाया क्रिकेट का ये नशा, मैं क्या बताऊं जी भाया क्रिकेट का ये नशा, हौला बना को सबका सुख चैन लूट रहा है।
मैं क्या बताऊं जी भाई, यहां क्रिकेट का ये नशा हौला बना को सबका सुख चैन लूट रहा है। सिग्नल पर मेरी कार रुकी तो गजब हुआ, सिग्नल पर मेरी कार रुकी तो गजब हुआ, भिकारिया को पैसे नहीं, स्कोर पूछ रहा है। देखिए कंप्यूटर का युग है, एक रचना कंप्यूटर पर सुना रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका व्यंग पकड़ पाएंगे, वरना मुझ सर के ऊपर से बाउंसर जाएगी। ध्यान से सुनिए। हमने सुना कंप्यूटर आज के युग का विधाता है, जो भी पूछो सच सच बतलाता है। हमने कंप्यूटर से पूछा, हमारे प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझाइए, भारत की जनता की स्थिति क्या है बताइए। कंप्यूटर से आवाज आई, जनाब पहले बटन तो दबाइए। कंप्यूटर से आवाज आई, जनाब पहले बटन तो दबाइए। हमने घबराकर जैसे ही बटन दबाया, स्क्रीन पर लिखा हुआ आया। लिखा था, हाल बड़े मजे में हैं, ऐश कर रहे हैं, सुख सुविधाओं से अपना घर भर रहे हैं, बंगला है, कार है, नौकर भी 4 हैं, दिल के बहलाने को नई नवेली नार है, हर रोज दावत है, विदेशी शराब है। यह सब पढ़कर हमारा सर चकराया, कंप्यूटर पर हमें बड़ा क्रोध आया। हमने कहा, नालायक सारा हाल गलत बता रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है। कंप्यूटर से तेज आवाज आई, चुप हो जा मूर्ख, हमें गलत बता रहा है। अरे तुझे जनता का हाल चाहिए तो नेता वाला बटन क्यों दबा रहा है। एक आजकल मैं देख रहा हूं जगह जगह भक्ति भावना बहुत चल रही है, जागरण हो रहे हैं, नहीं अजीब अजीब जो है बहुत से हो रहे हैं। हर आए दिन कहीं ना कहीं कोई जागरण, माता का जागरण, ये कथा भक्ति वक्ति बहुत चल रहा है। तो इन सब के बावजूद भी क्या स्थिति है, दक्षिणी भाषा की रामायण संदर्भ लेकर के मैंने एक रचना की है, ध्यान चाहूंगा। कितनी पूजा कितने जागरण, भक्ति से सब करते ही जा रहे हैं। कितनी पूजा कितने जागरण, भक्ति से सब करते ही जा रहे हैं। राम एक पैदा नहीं हो रहा है, रावण कह के बढ़ते ही जा रहे हैं। कितनी पूजा कितने जागरण, भक्ति से सब करते ही जा रहे हैं। राम एक पैदा नहीं हो रहा है, रावण कह के बढ़ते ही जा रहे हैं। हर शहर में हर कुर्सी पर रावण बैठा हुआ मिल जाएगा, हर शहर में हर कुर्सी पर रावण बैठा हुआ मिल जाएगा। इसके कामा उससे बदतर सुनेंगे तो दिल हिल जाएगा। असली रावण को छोड़ देखो, उसके पीछे पड़ते जा रहे हैं। राम एक पैदा नहीं हो रहा है, रावण कह के बढ़ते जा रहे हैं। संदर्भ देखिए, वो रावण की गर्दन पर तो 10 मुंडियां रखे हुए हैं, वो रावण की गर्दन पर तो 10 मुंडियां रखे हुए हैं। एक मुंडी के रावण में यहां 10 मुंडियां छुपे हुए हैं। वो रावण की गर्दन पर तो 10 मुंडियां रखे हुए हैं, एक मुंडी के रावण में यहां 10 मुंडियां छुपे हुए हैं। पुतले जला जला को हम शान से अकड़ते जा रहे हैं। राम एक पैदा नहीं हो रहा है, रावण कह के बढ़ते जा रहे हैं। दशरथ बोले जंगल को जाओ, सुनो मत हो ये। दशरथ बोले जंगल को जाओ, राम चले गए पाप बिचारे। दशरथ बोले जंगल को जाओ, राम चले गए पाप बिचारे। आज के रामा नमक हरामा, अम्मा बाबा कुछ बिचारे। दशरथ बोले जंगल को जाओ, राम चले गए पाप बिचारे। आज के रामा नमक हरामा, अम्मा बाबा कुछ भिजा रहे हैं। लक्ष्मण गपचुप साथ चले गए, लक्ष्मण गपचुप साथ चले गए। अब के तो झगड़ते जा रहे हैं। राम एक पैदा नहीं हो रहा है, रावण कह के बढ़ते जा रहे हैं। सीता अम्मा अपने मर्द के साथ ही जीऊंगी मरूंगी बोलती। सीता अम्मा अपने मर्द के साथ ही जीऊंगी मरूंगी बोलती। आज की सीता छक्का छम्मा, मैं तो मजे करूंगी बोलती। सीता अम्मा अपने मर्द के साथ ही जीऊंगी मरूंगी बोलती। आज की सीता छक्का छम्मा, मैं तो मजे करूंगी बोलती। कोंपों का 3 तेरा हो रहा है, रिश्ते सो उजड़ते जा रहे हैं। राम एक पैदा नहीं हो रहा है, रावण कह के बढ़ते जा रहे हैं। कुर्सी नक्को बोल को बोला, कुर्सी नक्को बोल को बोला, जब का सीधा भरत अन्ना। कुर्सी नक्को बोल को बोला, जब का सीधा भरत अन्ना। आज का भरत तो मौका तक रहा है, जड़ से खा जाने को गन्ना। कुर्सी नक्को बोल को बोला, जब का सीधा भरत अन्ना। आज का भरत तो मौका तक रहा है, जड़ से खा जाने को गन्ना। अब तो लोपा डोपी कर को जायदाद हड़पते जा रहे हैं। राम एक पैदा नहीं हो रहा है, रावण कह के बढ़ते जा रहे हैं। टाइम है। देखिए, अध्यापक हूं,
व्यंग कोशिश करता हूं यहीं से उठाने की। एक आखिरी रचना सुना रहा हूं दखनी में। मैंने एक जनरल नॉलेज का पेपर बनाया और बच्चों से उसके उत्तर, आज के माहौल में जो बच्चे जी रहे हैं, जैसी शिक्षा देख रहे हैं आप लोग, वो किस प्रकार के उत्तर देंगे। मैंने एक हाफ ईयरली छिमाही के इम्तिहान का पर्चा बनाया और मुझे जो उत्तर प्राप्त हुए आपको सुना रहा हूं। छिमाही का इम्तिहान था, मैंने पर्चा एक बनाया, जनरल नॉलेज के हिसाब से लिखो, उसको खूब सजाया। इम्तिहान का दिन आया तो सब पोटों को पर्चे बांटो। इम्तिहान का दिन आया तो सब पोटों को पर्चे बांटो। अच्छा अच्छा लिखना बोल को बदमाशों को कितना डांटो। घर में लाको इम्तिहान के पर्चों से जब मैं टकराया, पढ़ पढ़ के पोटों के जवाब अब्बा मेरा सर चकराया। क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, बोला तो बोला बोलेंगे। क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, बोला तो बोला बोलेंगे। अगर हो गया सबको मालूम, नहीं मालूम हम कैसा जीएंगे। सब बोलेंगे तुम ही सिखा रहे हैं, या तो माँ बाप बदनाम या टीचर बदनाम। सब बोलेंगे तुम ही सिखा रहे हैं, मेरे सर पर तोहमत आएंगी और सुक्का मुक्का खाको जीरो सो भी है सो नौकरी जाएंगी। तुम ही सुन को कुछ जवाब दो, कैसा इन भेजों में आया, सच्ची भी है सच्ची नहीं है ऐसा मैंने इसमें पाया। लीडर का मतलब पूछो तो क्या बोलूं मैं, डाकू लिखा। लीडर का मतलब पूछो तो क्या बोलूं मैं, डाकू लिखा। और हिम्मत का मतलब पूछो तो पोटा देखो चाकू लिखा। हिम्मत का मतलब पूछो तो पोटा देखो चाकू लिखा। पुलिस का मतलब पूछो तो गुंडों का उस्ताद लिखा था। पुलिस का मतलब पूछो तो गुंडों का उस्ताद लिखा था। और म्युनिसिपल क्या है बोले तो कूड़े पे की खाद लिखा था। स्टूडेंट क्या है पूछो तो उसको औंधा लोटा लिखा। स्टूडेंट क्या है पूछो तो उसको औंधा लोटा लिखा। एजुकेशन क्या है पूछो तो उसको सिक्का खोटा लिखा। एजुकेशन क्या है पूछो तो उसको सिक्का खोटा लिखा। स्कूल का मतलब पूछो तो बकरों का मंदा बतलाया। स्कूल का मतलब पूछो तो बकरों का मंदा बतलाया। और टीचर का मतलब पूछो तो रोटी का धंधा बतलाया। स्कूल का मतलब पूछो तो बकरों का मंदा बतलाया और टीचर का मतलब पूछो तो रोटी का धंधा बतलाया। इंजीनियर क्या है पूछो तो क्या बोलूं अजगर लिखा था। मधु भी नहीं बचा इस बात से। इंजीनियर क्या है पूछो तो क्या बोलूं अजगर लिखा था। डॉक्टर क्या होता पूछो तो बीमारी का घर लिखा था। धर्म मजहब क्या है पूछो तो मकड़ी का एक जाल बताया। धर्म मजहब क्या है पूछो तो मकड़ी का एक जाल बताया। और मुल्ला पंडित क्या पूछो तो बगले की एक चाल बताया। तुम ही बोलो सपोर्टों को उल्टा सीधा कौन सिखा रहे हैं। मेरे को पूछे तो बोलता हूं आजकल के हालात सिखा रहे हैं। आजकल के बहुत बहुत धन्यवाद। हास्यवंत कविताओं के लिए अब मैं स्टेज पर बुलाता हूं श्रीमती लक्ष्मी देवी जी को, जो अभी अब हमको कर्नाटिक संगीत सुनाएंगी। रुद्र जी एक काफ़ी रिच म्यूजिकल हेरिटेज से आती है। वो श्री गोविंदराव दंताड़े जी की पुत्री है। वो स्वयं भी एक काफ़ी ग्रेट म्यूजिशियन थे, स्कॉलर थे और स्वयं एक परफॉर्मर थे। वो उनकी डॉटर उनकी तरह एक ग्रेट सिंगर और परफॉर्मर है। उन्होंने अपने ही पिताजी के पास से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने काफ़ी जगहों पे अपने कौशल्य को दर्शाया है, जैसे कि उन्हें रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद में वोकेशनल अवार्ड मिला था 1999 में, और फिर 2012 में रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद से एक्सेलेंसी अवार्ड मिला था 2012 में। कलानिलयम हैदराबाद द्वारा संगीत सम्माननी का टाइटल मिला था 2005 में। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बी हाई ग्रेड प्राप्त किया था 80 के दशक में। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई जगहों पर परफॉर्मेंस दी है, जैसे न्यू जर्सी यूएसए में 2011 में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था। 2013 में कैलिफोर्निया में और बे एरिया चैनल तथा सैटेलाइट रेडियो में एक घंटे भर का विशेष मुलाकात की थी। A round of applause please for our chief guest श्रीमती ललिता कुरुडकर जी। उपाध्याय नूकल चिन्नर सत्यनारायण गारू। She will present to us 3 ragas today in Natakarunji,
राग कल्याण एंड राग कपी। And my namaskar to all members. At the outset, I would like to go down with all humility to my teachers who taught me probably only Sapasa. Because beyond that, I could not get from there because they were very legendary persons in Carnatic music and also others who taught me music. But at the outset, I would like to request all the members to consider my faults as my faults and bless me with your best wishes. Today I am going to render 3 different compositions set by Trimurti, you know, Sangeeta Trimurtis Tyagaraja, Shyama Shastri and Muthuswami Dikshita. I have chosen a composition by Muthuswami Dikshita where we will be praising Lord Vinayaka. I have chosen a composition by Shyama Shastri. It is also very famous because it's an experiment where the swara will be same but the lyrics will be different. Himadri Sute in Sanskrit and Birana Varalichi in Telugu. And another song written by Bhadrachala Ramadasu. The first composition is in Natakaranji Raga set to Rupakatala. It is about Parvati Kumara. He is also a person who shows the path. He is a Marga Sahaya and he is also Shobhita with Manikya and all those things. And there is a Shulkattu Swaram for this Kriti. With your permission, I would like to start. मार्ग सहाय प्रिय सुतं माधवाद्य मरादिनुतं मार्ग सहाय प्रिय सुतं माधवाद्य मरादिनुतं माणिक्य मकुट शोभितं
माणिक्यमकुटशोभितं माणितगुरुगुहमुदितं माणिक्यमकुटशोभितं माणितगुरुगुहमुदितं तं तकिटदणिदपदनिस मगसदिदरिणिणतुं तां निदमतकजिणुदिमितां दणिदमतदिणिणतुं तां तकिटदणिदपदनिस मगसदिदरिणिणतुं तां निदमतकजिणुदिमितां दणिदमतदिणिणतुं पार्वती कुमारं भराये शरवण भव गुरुगुहं पार्वती कुमारं भावये। The next composition is in Raga Kalyani. The equivalent of this raga is Yaman in Hindustani music, and it is also popularly known as Andhri. This raga originated in our state itself because the swaras or composition of swaras were known way back in nearly some 7,000 to 8,000 years ago.
ద మద పద మమ్మ పద శ్యామ కృష్ణ నీ సదని సరి సని ద మమ పద ని ద మద పమ గరి గమ పమ గరి గమ పద శ్యామ కృష్ణ గమప మప ధని శ్యామ కృష్ణ సరిగనే సగరి రి మగ గ పమ మద పమ ని ద సని సని ద పమ ద పమ గ ద పమ గ ద పమ గ గ గ ద మద పమ గ రి గ పమ గ రే సరి సరి గ గ గ మగ ధప మగరి గ రిగ ని రి మగ రి గ గరి రి గ రి గ మా గరి సని రి గ మ ధప మగ గ మ మ ప మగరి స గరి రి మగ గ ప మ ధప మగరి స గరి గ మ పద ని ద ప మ పద ని స ని 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 రి స ని ద ప మ పద ని ని స ద ని స ని రి స ని స ని ద ప మ పద ని స ని ద ప మ గ ని ద ని ద ప మ గ మ పద ని స ని రి స ని ద ప మ పద ని ద ని స ని స రి గ రి స ని ద ని గ రి స రి స ని స ని ద రి స ని ద రి స ని ద ప స ని ద ప ద రి స రి స ని ద ని ద ప రి స ని ద ప స ని ద ప మ ప ద ని స రి గ రి స రి స ని స ని ద గ రి స ని ద రి స ని ద ప గ మ ప ద ని శ్యామ కృష్ణ సోదరి గౌరీ పరమేశ్వరి గిరిజ ఆరాధన క్షణంబు సలిపితి వీరను విరాన వర వీచి నీను విరాన వర వీచి
చరణములే నమ్మితి చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి వరధి కట్టిన వరభద్రాచల వరధి కట్టిన వరభద్రాచల వరధి కట్టిన వరభద్రాచల వరద వరద వరదాని దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి ఆదిశేషనరమణ సేయకు ఆదిశేష నరమణ సేయకు అయ్యా అయ్యా నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి వనమున రాతిని వరదల చేసిన వనమున రాతిని వరదల చేసిన చరణం శరణం శరణం నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి బాగుగ నన్నేలు బాగుగ నన్నేలు భద్రాచల రామ బాగుగ నన్నేలు భద్రాచల రామ బాగుగ నన్నేలు భద్రాచల రామ దాసుడ 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 దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి To present her a shawl. Sukirti Anirudh Joshi, Shrikant Bhatlavande and Deepak Marathe to please come onto the stage. So while the stage is being set up, a little about have been a teacher, a guide, a philosopher for all the students in this institution, especially for my dad, my uncle and aunts who studied in Keshav Memorial. He has been awarded with more than 25 awards in his lifetime. One award by the President of India for his painting on the Bhopal gas tragedy, and he himself has published about 10 books. More than just being a poet, he primarily is a painter by art and as a teacher, and through generations he has trained people on painting and drawing in Keshav Memorial. A big round of applause for Dr. Narendra Rai, please. Sir, Jayashree Bhai Patnekar, and after coming to Hyderabad, she is trained under Srimati Lalita Dantale Kurulkar. She is a budding vocalist in Hindustani classical. She has done her Visharad in Hindustani classical. Accompanying her on harmonium is Deepak Marathe. Deepak is a disciple of late Pandit Rambhau Vijapure and presently under the tutelage of Padma Vibhushan Pandit Ramnarayan ji for Sarangi. Deepak is accomplished
in vocals and harmonium. He has performed with Ustad Rakshid Khan, Talat Aziz, Roop Kumar Rathod and Anup Jalota, both within and outside the country. Along with him on tabla is Shrikant Nandkumar Bhatlavande, son and disciple of late Pandit Nandkumar Bhatlavande. He has received All India Scholarship and also is a B high grade in All India Radio. He is a Asthan Vidushak in Kanchi Kamkoti Pitham. हमारे गुरुजन को प्रणाम। और शुरुआत में मैं राग मारू बिहाग गाने की कोशिश करूँगी और उसके बाद चैती, और गाते वक्त अगर कुछ गलत हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा।